अब हम भरतनाट्यम की प्रथम शुद्ध नृत्य रचना अलारिपू की ओर बढ़ते हैं। अलारिपू शब्द का शाब्दिक अर्थ है पूर्ण रूप से खिलना। जिस प्रकार एक कली धीरे धीरे खिलकर अपनी संपूर्ण सुंदरता को प्रकट करती है, उसी प्रकार यह प्रस्तुति नृत्यांगना के शरीर, मन और चेतना को नृत्य के लिए जागृत करती है। यह भरतनाट्यम की प्रथम शुद्ध नृत्य रचना है जिसमें अभिनय का समावेश नहीं होता। केवल लय, ताल, अंग संचालन तथा पदचालन के माध्यम से नृत्यांगनाएं अपनी तकनीकी दक्षता, संतुलन एवं एकाग्रता का परिचय देती है। राग नाटई तथा मिश्र चापू ताल पर आधारित यह प्रस्तुति भरतनाट्यम मार्गम में सशक्त एवं ऊर्जामय आरंभ मानी जाती है। अलारिपू की प्रस्तुति के उपरांत शक्ति, भक्ति, बुद्धि और अदम्य साहस के प्रतीक पवन पुत्र भगवान श्री हनुमान की वंदना मनोज एवं मारुत तुल्य प्रस्तुत करेंगी कुमारी राशि तरे। श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान की महिमा का गुणगान करती यह स्तुति राग नीलांबरी में निबद्ध है। अलारिपू।
अब हम भरतनाट्यम की अगली शुद्ध नृत्य रचना जति स्वरम की ओर बढ़ते हैं। जति स्वरम नृत्य की उस सुंदर अवस्था का परिचय कराता है जहां जति और स्वर का अद्भुत संगम होता है। इसमें अभिनय का स्थान नहीं है, बल्कि लय, गति, संतुलन और जटिल पदचालन के माध्यम से नृत्यांगनाएं अपनी दक्षता प्रकट करती है। राग वसंत एवं रूपक ताल में निबद्ध यह प्रस्तुति संगीत और नृत्य के अद्वितीय सामंजस्य को सुंदर उदाहरण देती है। जति स्वरम की प्रस्तुति के उपरांत शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की वंदना प्रस्तुत करेंगी कुमारी विभावरी तांबे। यह स्तुति राग वसंत में निबद्ध है। जति स्वरम। सा नी ग म ग रे नि सा नि सा ग म ग नि द सा सा नी ग म ग रे नि सा नि सा ग म ग नि Sa
Ga
करुणा समुद्रम सरसिजो करुणा राधा सहायो अति सुंदर मलदन राधा सहायो अति सुंदर मलदहासं अनिशं अब हम मार्गम के उस पड़ाव में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां शुद्ध नृत्य के साथ भाव और अभिनय का समावेश होता है। अगली प्रस्तुति को शब्दम कहते हैं। आज का शब्दम शंकरी शंकुरु चंद्रमुखी आदि शक्ति माँ पार्वती को समर्पित है। इसमें माँ शंकरी, शिवप्रिया, चंद्रमुखी, गौरी, शांभवी तथा संकटहारिणी के विविध दिव्य स्वरूपों का सुंदर वर्णन किया जाता है। सात्विक अभिनय के माध्यम से नृत्यांगनाएं मां को वात्सल्य, करुणा, शक्ति और कल्याणकारी स्वरूप को सजीव रूप में प्रस्तुत करेंगी। राग सावेरी एवं रूपक ताल में निबद्ध इस भावपूर्ण प्रस्तुति के साथ प्रस्तुत है शब्दम। शब्दम की प्रस्तुति के उपरांत आदि शक्ति मां दुर्गा की स्तुति प्रस्तुत करेगी कुमारी सुखदा कासारी। यह स्तुति राग केदार गौड़ में निबद्ध है। शब्दम। सरसी जब
अब हम भरतनाट्यम के मार्गम की सबसे महत्वपूर्ण, विस्तृत एवं चुनौतीपूर्ण प्रस्तुति वर्णम की ओर बढ़ते हैं। वर्णम नृत्यांगना की वर्षों की साधना, अनुशासन और समर्पण की सर्वोच्च परीक्षा माना जाता है। इसमें शुद्ध नृत्य, भाव, अभिनय, लय तथा पदचालन का अद्भुत संगम है। यही कारण है कि इसे भरतनाट्यम प्रस्तुति का हृदय माना जाता है। आज की यह वर्णम रचना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसमें विरह से व्याकुल गोपियां करुणा के सागर श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि वे उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। चित्तस्वरा, साहित्य, लय और भावों का सुंदर संगम इस प्रस्तुति को अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। यह वर्णम रचित है राग धन्यासी एवं जाति आदि ताल पर। वर्णम की प्रस्तुति के उपरांत बाल मुकुंद भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में प्रस्तुत किया जाएगा श्लोक करारविंदे पदारविंदे। प्रस्तुत करेंगी कुमारी अन्वेषा कदम एवं कुमारी सुखदा कासारे। यह स्तुति राग मोहनम में निबद्ध है। प्रस्तुत है वर्णम।
Baba
An announcement for all. This is not a break. This is not an intermission. This is the felicitation ceremony. We are preparing for the felicitation ceremony and the certificate distribution. Meanwhile, I request our chief guest, Dr. Ajit Manyalji, our guest of honor, Dr. Chaudhary ji, Dr. Dipankar Chaudhary ji, our guest of honor, CMA Chandrasekhar Joshi ji, to kindly come on the backstage. I request our special invitees, Dr. Himanshi Parikh ji. Next, it's my honor to introduce our beloved Guru, Sushri Soni Sadarangani, Chairperson of the Art Academy, Mumbai, a devoted disciple of her revered Guru, late Guru Ravi Sharma ji. She has dedicated over 25 years to preserving, propagating the rich tradition of Bharatanatyam. We are celebrating the silver jubilee of the Radha Krishna dance classes this year. I mean, that does account to something. Through her unwavering commitment, she has nurtured numerous students and guided them towards excellence in this sacred art form. I request Kumari Rashi Tare to felicitate our beloved Guru, Shri Sushri Soni Sadarangani. I mentioned that 25 years the Academy has been teaching. We have one of the first students of the class next on stage. It's my pleasure to introduce Mrs. Nalini Senthil, a passionate Bharatanatyam teacher and choreographer based in Abu Dhabi, a devoted disciple to her Guru, Sushri Soni Sadarangani, since 2000, and teaching since 2003. She has completed her Arangetram and teacher's training under her Guru's guidance. For the past 8 years, she has been nurturing young dancers in UAE, with her students performing at prestigious international venues, earning accolades at various competitions, and participating in the LinkedIn Book of Records Confluence of Indian Dance Arts. We are delighted to have you with us this evening. I request Kumari Anvesha Kadam to felicitate Srimati Nalini Senthil. Next is my privilege to introduce our esteemed chief guest, Dr. Ajit Motiram Manyal, a distinguished businessman
Dedicated social worker, Dr. Manial has devoted his life to social awakening, community service, and the promotion of Sindhi language and culture. He has held several leadership positions in prominent social and cultural organizations, including serving as the All India President of the Vishwa Sindhi Seva Sangam and the Chairman of the Bandra Hindu Association. His unwavering commitment to public service, national integration, and community welfare has earned him immense respect and admiration. We are truly honored to have Dr. Ajit Manial grace this occasion with his presence. It is due to his unwavering support that the premise that we required for the rehearsal was made available to the students for this program as well. May I now request Kumari Vibhavri Tambe to felicitate our esteemed chief guest, Dr. Ajit Manial ji. Our guest of honor, Dr. Dipankar Chaudhary. He is a distinguished consultant radiologist serving at leading hospitals in Navi Mumbai and at D.Y. Patil Medical College. He currently serves as the president of the Rotary Club of Navi Mumbai Valley Golfers and is the founder president of the Khargar Doctors Association. A published author of the book Fear and Fever, Dr. Chaudhary is also a talented doodle artist, a passionate golfer, and a tabla player. His warm, lively, and encouraging personality makes him an inspiration to everyone he meets. We're truly honored to have you with us this evening. May I now request Kumari Sukhada Kasari to felicitate our esteemed guest of honor, Dr. Dipankar Chaudhary. Our guest of honor, CMA Chandrasekhar Shekhar Joshi ji. A distinguished cost accountant with over 3 decades of professional experience, Mr. Joshi has held senior leadership positions with a Fortune 500 company and several reputed organizations in India and abroad. His expertise in business strategy, international finance, and corporate restructuring, coupled with his passion for teaching and lifelong learning, makes him an inspiring personality. We are honored to have you with us. May I now request Kumari Rashi Tare to felicitate our esteemed guest of honor. And also a humble person. Our special invitee, Dr. Himanshi Parikh, is an accomplished Bharatanatyam teacher with over 30 years of experience. She is the founder of Nritya.Verse, a dance academy dedicated to promoting Indian classical dance. Academically, she has served as a lecturer in biology and holds both a PhD and BE degree. Spiritually, she has completed Bhakti Vaibhav studies and is currently pursuing Bhakti Vedanta. She also actively serves the RGCC community at the Radha Gopinath Temple, ISKCON Chowpatty. I now request Kumari Anvesha Kadam to felicitate Dr. Himanshi Parikh. We're delighted to welcome Sushri Geetu Sadarangani, chairperson of the Art Society Mumbai. She has successfully completed all 5 volumes. You're witnessing volume 3, ma'am has completed volume 5, along with an additional volume X, and is an accomplished rifle shooter as well as a successful marathon runner. Her achievements across diverse fields reflect her commitment to excellence, discipline, and perseverance. A powerhouse of energy. I now request Kumari Vibhavri Tambe to felicitate Sushri Geetu Sadarangani. We have on stage Shri Yogesh Kadam, who represents all the parents today. He is the parent of Kumari Anvesha Kadam, and he'll be delivering the vote of thanks. Thank you so much, sir. I request Kumari Sukhada Kasare to felicitate Shri Yogesh Kadam ji. Thank you all our esteemed guests on the dais for gracing us and blessing the girls. We have our official certificate and cards, and I request our chief guest, Dr. Manial ji, to present the certificates and the ID cards to the girls. First, we have Kumari Sukhada Kasare. I think the girls cannot wait to receive their certificates and ID cards.
कुमारी सुखदा कासारे, कुमारी राशि करे, त्यांनी तर उभं राहावं लागेल. We now have Kumari Anvesha Kadam receiving her certificate and ID card. And last but not the least, Kumari Vibhavari Tambe. Thank you so much, sir. As a token of love, gratitude, and appreciation, we have the Academy presenting sweets and gifts to their beloved students. I request our guest, special invitee, Miss Nalini Senthil, a senior of the class, giving, passing on the love and admiration to the students, to kindly present as a token of love to the students, Kumari Sukhada Kasare. कुमारी राशि करे, कुमारी अन्वेषा कदम, and कुमारी विभावरी कांबे. Thank you, Mrs. Nalini Senthil. We now request our esteemed dignitaries, they have graced us with their presence. We would also like to be graced with your kind words. I request our chief guest, Dr. Manyalji, to kindly share a few words. Radhakrishna Dance Classes, the Art Academy Mumbai, गुरुमाई सोली सदाराम गांधी जी, उपस्थित सारे उत्सव मूर्तियां, सारी नृत्यांगनाएं, सारे पालक, अभिभावक, ऑल पेरेंट्स, आज एक अविस्मरणीय दिवस है. एक अलग प्रकार की अनुभूतियां रोज होती है सभी को, लेकिन अलग प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति आज यहाँ महसूस की जा रही है. कितनी भी शताब्दियां चली जाए, 21वीं शताब्दी यह भारत की शताब्दी और हिंदू शताब्दी है. नृत्य सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं है. हजारों वर्ष पूर्व अपने देश में बहुत सारे शास्त्रों का निर्माण हुआ, जिसमें नाट्य शास्त्र भी. एक एक शास्त्र परिपूर्ण है. किसी एक शास्त्र में भी आपने एक अध्याय में भी, एक मंत्र में भी और एक शब्द का भी आपने मूल ले लिया, सीख लिया, ग्रहण किया, तो आपकी जीवन की सफलता उसमें निहित है. आज हमने इतने नृत्य देखे, मूवमेंट्स थे, एक्सप्रेशंस थे, मन की बातें भी थी, अष्टांग योग की सारी चीजें उसमें नजर आई. यम नियम थे, योग क्रियाएं थी, प्राणायाम था. ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरे वेद वेदांत का निचोड़ भारतनाट्यम के माध्यम से आज हम प्रस्तुतिकरण सिर्फ देख नहीं रहे, तो अनुभूति भी ले रहे, खुद का भी अनुभव ले रहे. कर तो ये रहे थे नृत्य, लेकिन अंदर से ऐसे लग रहा था कि समुद्र की जिस तरह की वेद उठती है, उसी तरह अपने शरीर के अंदर भी उस तरह की आध्यात्मिक वेव्स, यानी अपने आत्मा की पहचान, अपने वेदांत का मूल है कि मंत्र कहो या सुनो, उसकी अनुभूति अंदर होनी चाहिए. मैं इस विश्व में क्यों आया हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति यहाँ आज प्रस्तुतिकरण में दिख भी रही थी और अनुभूत भी हो रही थी. देखिए, हर किसी चीज की भाषा रहती है. हमने नृत्य देखा, उसकी भाषा थी.
कपड़े देखे, वेशभूषा देखी, मुद्राएं देखी हमने। जैसे मराठी में कहा होता है ना, शब्दांच्या पलीकडे, ऐसे भाषा के भी पलीकडे, शब्दों के उस पार, गायन के उस पार, मंत्रों के उस पार जब हम जाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि अपने अंदर की अनुभूति महसूस होती है। मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती कि विकसित भारत में इस तरह के आयोजन प्रयोजन कार्यक्रमों के द्वारा ही यह भूमि, यह भारत भूमि जो अपने स्थान पर थी, विश्व गुरु के स्थान पर थी, ऐसे ही कार्यक्रमों के द्वारा हम पुनः अपने आंखों के सामने इस देश को, इस अपने मातृभूमि को विश्व गुरु के स्थान पर हम देखने जा रहे हैं। और हमारे गुरु भाइयों की और गुरुजनों की कृपा रही है कि इतने वर्षों से भी पारंपरिक प्योर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन इस मुंबई बड़े जीवन में करना और करके दिखाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, पेरेंट्स धन्यवाद के पात्र हैं कि अपने बच्चों को, अपने पुत्रियों को, अपने पुत्रों को इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं। ये आगे जाकर न सिर्फ अपना, अपने परिवार का, लेकिन देश का नाम रोशन करने वाली थी। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है इस तरह के कार्यक्रम पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में होने चाहिए और यहाँ के बच्चे बाहर जाने चाहिए, ताकि अपनी जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, वह बाहर के लोगों को भी आकर्षित कर रही है। हमें भी करना चाहिए और आपने इस तरह का कार्यक्रम रखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज यहाँ त्रिवेणी संगम हुआ है, त्रिवेणी संगम अपने द्वार पर आया है और आप सभी ने हमको वहाँ डुबकियां लगाई, इसलिए आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। मैं मंत्र कहूंगा। हमारे झूलेलाल जो वरुण देवता है, हमारे में पहले जब कहते हैं तो कहते हैं जेको चोंदो झूलेलाल, जो बोलेगा झूलेलाल बोलिए, जेको चोंदो झूलेलाल तेजा दीदा बेड़ा पार, यानी उसके जीवन की जितनी भी दिक्कतें हैं, तकलीफें हैं, वो सारे पार हो जाएंगे। जेको चोंदो झूलेलाल तेजा दीदा बेड़ा पार। Thank you so much, sir. Thank you so much for gracing us with beautiful words that really brought out the entire meaning and essence of what we do in our day-to-day life as dancers. Thank you so much. I now request our distinguished guest of honor, Dr. Chaudhary ji, to kindly grace us with a few words. Thank you so much. Thank you so much for giving me this opportunity. As a president of Rotary Club of Valley Golfers, Navi Mumbai, मी तुमचे आभार मानतो की मला या स्टेजवर ऑपॉर्च्युनिटी दिली राधाकृष्ण डान्स अकॅडमीने. माझे अर्धे जास्त वर्ड्स तर म्हणजे सर आम्ही संपून टाकले, त्यामुळे मला ते जास्त लागेल आणि मी शॉर्टमध्ये बोलणार आहे. विभावरी, राशी, सुखदा, अन्वेषा सर्वांनी खूप छान परफॉर्म केलं. ऑल द बेस्ट बेटा. पण या परफॉर्मन्सच्या मागे तुम्हाला माहित आहे का की किती मेहनत लागते, किती डेडिकेशन लागतं आणि बेसिकली पॅशन खूपच लागतं. या सर्वांना मॅनेज करायला त्यांचा गुरु महत्वाचा आहे. लेट्स क्लॅप फॉर दिस. मला फक्त एकच गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे, मुलांना आणि पॅरेंट्सला स्पेसिफिकली, जे मुलं असे पॅशन फॉलो करतात त्यांना पॅशन आयुष्यभर फॉलो करून द्यावे. पुढे फ्युचरमध्ये त्यांना बरेचसे ऑपॉर्च्युनिटीज येणार, पण हा जर पॅशन त्यांनी फॉलो केला तर त्या ऑपॉर्च्युनिटीला ते पीकवर देऊ शकतील. हा माझी फक्त इच्छा आहे. आणि सर्व पॅरेंट्सला मी तेच म्हणतो की त्यांनी बंद करून त्यांना मुलांना कंटिन्यू करू द्या जे पण करतायत ते. हे कारण मी याच्यासाठी सांगतो कारण मी 8 आणि 9 मध्ये 88 मध्ये आय स्टार्टेड लर्निंग तबला. मी तबलाचे क्लासेस केले, स्टेज शोज केले, पण नंतर मी मेडिकलमध्ये गेलो आणि मेडिकलच्या इथं वाहून गेलो आणि आय जस्ट स्टॉप एव्हरीथिंग. 35 इयर्स नंतर मी 4 वर्षापूर्वी परत तबला चालू केला. असं नाही की मला तबला येत नाही, पण मला फक्त 2-3 जागा ताल येतात आणि माझा स्पीड खूप कमी झाला. आय कॅन परफॉर्म ऑन स्टेज. आय रिग्रेट दॅट थिंग ऑलवेज. तर मी नेहमी सांगतो सर्वांना की तुम्ही कंटिन्यू करा, जे पॅशन तुम्हाला ते कंटिन्यू आयुष्यभर करा.
whatever field you take. So let's learn, keep learning, keep going. Thank you. Thank you so much, sir. I now request our guest of honor, Mr. Joshi ji, to kindly grace us with a few words. Thank you for giving me this opportunity. All right. This is the third time I'm attending this function. You know, today morning I was exercising like this. If you see, 90% of the time these girls are standing like this or waving like this. I could do it only for 90 seconds. So now I learned that discipline, direction and dedication that gives you a completely different life from an ordinary person. So I'm very proud to see this institution, to see this particular function. और बेटियां जो 3 साल में देख रहा हूँ उनके अंदर जो चेंज हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। आई एम अभी मुझे जो बोलना था वो सब लोग ने बोल दिया है और मुझे जो कहना था वो लड़कियों ने करके बताया है। So let's call me next time also. Thank you. Yes, like sir mentioned, I think almost everybody on the dais, nobody is here who's a novice. Usually we have guests who are very new to the form and who are watching it for the first time. But today I think on the dais, like sir said, at least 3 performances everybody must have witnessed. It's a beautiful occasion to have such dignitaries on the dais. I now request Mrs. Nalini Sethilji to kindly share a few words. Good evening, audiences, respected dignitaries, the parents, and all the beautiful girls there. It's always a privilege to be here on the stage. It's always a privilege to be here on the stage and share my emotions, my happiness with everyone here around. To start with, I have always, sorry for that. I have so many things to say, but it's always overwhelming to witness such performances and share stage with my own guru. I'd like to begin where my dance journey started, at Radha Krishna dance classes, under the guidance of my beloved guru, Ms. Soni Sadarangani. She's one of the rare gurus who always wants the best for her students. Over the years, she has always nurtured the kids to perform and to grow as a beautiful dancer. She is one of the gems, rare gems from all the gurus. In India and abroad, I've seen so many gurus and teachers, but she is the one who will push all the kids to do their best. I'm happy, I'm privileged, I'm honored to be here. Thank you so much. And to the girls, to all the beautiful girls, their congratulations and their parents to have completed the Margam 3. It's a very big thing. Please continue to do so, and it's your responsibility now to pass on this to the society. Don't stop. Go ahead, finish it, okay? Come back to your classes and give what you have to the future generations. Thank you so much. Thank you so much, all the dignitaries. Your words of wisdom will stay with the girls, and I hope it resonates and shows in their practice. I now request our beloved guru, Shri Soni Sadarangani ji, to introduce our teachers and the students and encourage and bless the girls. Very good evening to all of you present here. Radha Krishna Dance Classes and the Art Academy Mumbai welcomes you to the second batch of students performing Volume 3. I pay my first respect and gratitude to my
beloved Guru, great Shri Ravi Sharma, who has toiled to systematically bring about the matter in Bharatanatyam in the form of 5 volumes with books, audios, and videos. The credit for all the work done here till date goes to him. I also go down to Lord Ganesha and Lord Nataraja, the god of dance, to seek their blessings for our ventures. Our esteemed guests on the dais, you have cared to take out time to grace this occasion. Your presence here means a lot of support in itself towards our Indian culture. Thank you so much for being here. Time and travel both have become difficult issues in the city today. My many thanks to you for being here. Then our respected guests in the audience and our student family, it means a lot to think about supporting and appreciating somebody's work which is certainly rewarded in return by nature. If you come to view the program, somebody else will come to see you also. So you got to have that thought. Devotion to the gods. Bharatanatyam means devotion to the gods and joy to all is what we attempt in our dance. When a common man enjoys our work for 3 hours without getting bored and conveys this to us, it is a reward in its truest sense. I'd like to first call upon, as we go by the felicitation ceremony, I'd like to call upon Kumari Akanksha Thorat and Kumari Arpita Prabhu. The credit for today's program goes to these two. They have just completed their volume 3 last year, and they are the ones who have trained these girls. So just imagine, they are themselves very young girls. They completed volume 3, trained them, choreographed as well. The entire show has been handled by them. The organizing and everything has been done by me. Supervising has been done by me. But the entire thing has been taught by Akanksha and Arpita. I thank you from the bottom of my heart for coming this far. In the sense, they completed their volume 4 this year, and they'll be completing their volume 5. So they're really passionate about their work, and they intend to take it ahead, take my Guruji's legacy ahead. So I request the girls to come and felicitate Arpita Prabhu and Akanksha Thorat. Akanksha is a 3rd year engineering student, and Arpita is 2nd year degree BA student. Thank you so much, Akanksha and Arpita. Along with Akanksha and Arpita, we have 2 more pillars of the class, Nityashri Yakkali and Yashika Rathod. My class stands on these 4 pillars. These are the teachers who have themselves performed. Nityashri and Yashika performed in volume 2, and they are the ones who handle the class completely. Thank you so much, teachers. Can I request Sukhada and all the girls, any of you, please come and felicitate Nityashri and Yashika. Have a quick snap together. I shall now formally introduce the girls, the dancers today. Kumari Sukhada Kazari, daughter of Srimati Sanjeevani and Sri Sanjay Kazari, the student of Standard 10 at the Apostolic Carmel High School, Bangalore. She is an ardent follower of this dance form and joined the class as a tiny tot. I remember Sukhada very little, very tiny when she came to class. Maybe KG or first standard. She completed her volume 1 in 2024 with the same girls and volume 2 in 2025. And largely she has participated in many other theme shows of our class. Seeing her grow into a graceful and beautiful dancer is a matter of pride for me. Many congratulations to Sukhada on volume 3 and keep focusing on the journey to volume 5, Sukhada. Congratulations to her parents as well.
Next, we have Kumari Rashi Tare, daughter of Srimati Shilpa and Sri Rajendra Tare. She is a student of standard 12 at the Bukari College. I remember spotting Rashi as a very small child in our class at Apostolic Carmel High School. I liked her affinity for dance and conveyed this to her parents in the early days itself. Luckily for her, the parents' support has brought her to this level. I must congratulate the parents for bringing her to this level, this far. She has completed her Volume 1 in 2024 and Volume 2 in 2025. She has performed in almost all our other shows and thus becomes a known face and, as I call them, stars of the class. Being a fun-loving and talkative girl, she troubles me a lot. She talks a lot. She does distract her batchmates. But in today's wavering mindset scene, she does deserve praises for keeping committed to the dance form and to her journey towards Volume 5. Congratulations to you and your parents, and wishing you many more. Thank you. Kumari Anvesha Kadam, daughter of Srimati Prasiddhi and Sri Yogesh Kadam. She is a student of Standard 12. Lately, having given her NEET exam, she wants to pursue medicine. She joined in for this batch of Volume 3 much later after she finished all her exams. And we were worried for her. But she has proved her capabilities by so marvelously picking up the entire portion with a little extra help here and there. Not much. Anvisha didn't trouble us much. We were very worried how she's come after 1 month and how she will cope up, but she's been so capable. I find it very commendable for her and her parents to have planned and made time for the Volume 3 program. Congratulations to Anvesha and her parents. Keep it up, my dear. Then we have another star, Kumari Vibhavani Tambe, daughter of Srimati Jyoti and Sri Umesh Tambe. She's a passionate dancer and performer of Bharatanatyam. She recently completed her SSC with 80% marks and will now be joining the FYJC soon at Jain College. She completed her Volume 1 in the year 2024 and Volume 2 in 2025. Vibhu, as everyone calls her, is a very capable and graceful dancer. Besides her good looks, she comes across as a very decent and disciplined dancer in her conduct. In her conduct as a person, we've seen her to be very responsible and very decent. Congratulations, Vibhavani, for your Volume 3 performance, which is a rare scene as of today. You can see we have so many students who perform their Arangetram, but going ahead to this level means a lot. I don't know at this age whether you understand it, but it means a lot. If it doesn't happen today, it may not happen tomorrow. This is for the students who are there in the audience. If it's not today, it may never be happening tomorrow. Time is very precious. So my hearty congratulations to all the parents and the dancers on this occasion. We have another 3 beautiful items waiting and also some delicious snacks waiting for you. So I shall hand over the mic to Sri Yogesh Kadam for the vote of thanks. नमस्कार. मी आता मराठीतूनच बोलणार आहे, पण बहुतांश प्रेक्षक हे मराठीतच आहेत. आज मला या मंचावर बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल धन्यवाद. आजच्या सुंदर आणि अविस्मरणीय भरतनाट्यम कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, प्रमुख पाहुणे, पालकवर्ग, गुरुजन आणि सर्व रसिक प्रेक्षक यांचे मनपूर्वक आभार. सर्वप्रथम आपल्या प्रमुख पाहुण्यांनी आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. तसेच आपल्या मार्गदर्शनपर शब्दांनी त्यांना नृत्यांगनांना प्रेरणा दिली त्याबद्दल मनपूर्वक आभार. या कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन करण्यासाठी अथक परिश्रम घेणारे गुरु श्रीमती सोनी सदारंगाणी आणि त्यांची शिक्षक टीम
यांचे विशेष आभार. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे नृत्यांगनांना आपली कला सादर करण्याची सुवर्ण संधी मिळाली. अशा या गुरूंबाबत एक छोटीशी कविता. गुरु म्हणजे ज्ञानाचा अथांग सागर. गुरु म्हणजे ज्ञानाचा अथांग सागर. गुरु म्हणजे जीवनाचा सुंदर आधार. तुमच्या कष्टांनी या मुलांना घडविले, कलेचे अमूल्य धडे त्यांना दिले. प्रत्येक ताल, प्रत्येक अभिनय, प्रत्येक पाऊल तुमच्या मार्गदर्शनाने झाले अनमोल अधिक. रंगमंचावर उभे राहण्याचे तुम्ही दिले धैर्य. स्वप्नांना दिले नवे पंख आणि नवे आकाश. आज या यशाच्या क्षणी एकच भावना दाटते अंतरंगी. गुरुवर्य प्रति कृतज्ञतेची मनोमन वाहतो फुले. तुमचे ऋण फेडणे आम्हा कधीच शक्य नाही. मनपूर्वक आभार, विनम्र प्रणाम स्वीकारा हीच विनंती. आज अप्रतिम सादरीकरण करणाऱ्या सर्व नृत्यगणांना कुमारी सुखदा, कुमारी राशी, कुमारी अन्वेषा आणि कुमारी विभावरी यांचे मनपूर्वक अभिनंदन. त्यांच्या मेहनतीने आणि समर्पणाने हा कार्यक्रम अधिकच रंगतदार झाला. त्यांच्यासाठी काही शब्द ओठावर येतात. ताल सुरांच्या लयित रंगली सुंदर मैफिल सारी. ताल सुरांच्या लयित रंगली सुंदर मैफिल सारी. नृत्यांगणाच्या कलेने उजळली ही संध्याकाळ न्यावी. पावला पावलात होतो आत्मविश्वासाचा साज. तुमच्या नृत्याने जिंकले उपस्थितांचे मन आज. कष्ट साधना आणि चिकाटी ही सुंदर कहाणी तुमच्या नृत्यकलेने साजली आमची ही रंगमंचवाणी. तुमच्या सादरीकरणाने लाभला आनंद अपार अनंत. घुंगराच्या नादात उमटला संस्कृतीचा गंध. तुमच्या सादरीकरणाने लाभला आज आनंद अपार अनंत. तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा. स्वीकारा आमचे हार्दिक अभिनंदन आणि शुभाशीर्वाद सच्चा. तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून कलाकारांना उत्साह आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या सर्व पालक, प्रेक्षक आणि हितचिंतकांचे मनपूर्वक आभार. तसेच पडद्यामागे राहून ध्वनी, प्रकाश, सजावट, छायाचित्रण आणि वृद्धवादक यांना इतर सर्व व्यवस्थापन करणाऱ्या प्रत्येक सहकार्यांना मनपूर्वक आभार. हा कार्यक्रम पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रामुख्याने श्रीमती शिल्पा तरे, श्रीमती ज्योती तांबे, श्रीमती संजीवनी कासारे यांनी देखील खूप मेहनत घेतली आहे. त्यांचे मनपूर्वक आभार. आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पडला. अजूनही कार्यक्रम बाकी आहे. आपण तसेच प्रेम, आशीर्वाद आणि सहकार्य यापुढे देखील या मुलांना देत राहाल ही अपेक्षा अंबज्ञ. The vote of thanks is getting more and more artistic with each show. All right, with this we come to an end to the felicitation and the certificate distribution of the girls. We request our
गुहं सदा शरणं प्रपद्ये गुहं सदा शरणं आडुचिदु बरम आडुचिदु बरम ओ आडुचिदु बरम ओ आडुचिदु बरम आडुचिदु बरम Dalam kutak di kutak tadi pun jom tat tat kanci tam, tom tat kanci tam, tom kanci tam, tom tam, tom tik tam, tom tom. आडुचिदु बरम यारुम मरियम अवलभान यारुम मरियम अवलभान शिरडी पार सेवड़ी तूकी शिरडी पार सेवड़ी तूकी बालकृष्ण मोतु पतिमति चढ़ाई बालकृष्ण मोतु पतिमति चढ़ाई ताड़म जड़ो घोड़ सती तगमियना ताड़म जड़ो घोड़ सती तगमियना यारु मरिया अंबर बाला सेवड़ी तूकी बालकृष्ण मोतु पतिमति चढ़ाई ताड़म जड़ो घोड़ सती तगमियना प्रेक्षकगण, किसी भी भरतनाट्यम प्रस्तुति की सफलता केवल नृत्यांगनाओं की साधना और अभ्यास पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उनके समर्पित कलाकारों पर भी आधारित होती है, जिनके संगीत से नृत्य में प्राण आते हैं।
अब मैं आप सबके सामने परिचय कराना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के हमारे आदरणीय संगीतकारों से। नटुआंगम के लिए हमारे साथ है आदरणीय गुरु सुश्री सोनी सदारंगानी जी और इन्हें सम्मानित करने आएंगी कुमारी सुखदा कासारे। गायन पर हमारे साथ है श्री विष्णुदास जी, इन्हें सम्मानित करने आएंगी कुमारी राशि तरे। मृदंगम पर हमारे साथ है श्री शक्तिधरन जी, इन्हें सम्मानित करने आ रही है कुमारी अन्वेषा कदम। वायलिन पर हमारे साथ हैं श्री पी परमेश्वरन जी, जिन्हें सम्मानित करने आ रही है कुमारी विभावरी तांबे। इसी तरह इस कार्यक्रम की सफलता में रंगमंच के पीछे हमारी बैक स्टेज टीम में शामिल है आदरणीय शकुंतला बेड़ेकर जी और उनके साथ श्री नीलेश भाटकर जी। इन्हें सम्मानित करने आएंगी कुमारी सुखदा कासारे और कुमारी राशि तरी।